Hello students, welcome back to my channel. I am Shruti Avasthi and today we will discuss about nutrition in amoeba. So this topic is very important. It comes in short questions or like 3-mark question that explain nutrition in amoeba. So the agenda of today's video is like we will learn about what is amoeba, what kind of organism it is, and the steps which it takes to like how it gets nutrition. Okay, so you can refer to the adjacent diagram also that is mentioned here. So how the amoeba intakes the food, in this video we will explain this. Okay, so the first we will just see the key points, that is injection, what is amoeba we will learn first, then ejection we will learn what is ejection, then digestion, assimilation, and finally ejection. Okay, so first of all we will see the diagram of the amoeba. So this particular diagram you can refer for your exams because all the important labels have been given here. So a label diagram in science exam is very important and very attractive, and it gives a boost to your marks. So you can refer to this particular diagram to draw in your exams. Okay, so in this particular diagram there is a food particle, okay, which the finger like projections are trying to cover it up. Okay, and after covering the food particle, it will go into the food vacuole. Okay, it will come into the food vacuole, and then there is a nucleus inside the amoeba, vacuoles are there, cytoplasm is there, and membrane, the cell wall is there. Okay, so this is the particular diagram of the amoeba which you can refer for your exams. So now move on to further video and slide, that is what is amoeba. So amoeba is an aquatic protozoan animal. Aquatic protozoan animals means which is found in the waters. Okay, which is found in water bodies like oceans or lakes or rivers. Okay, so it is an aquatic protozoan animal, and the mode which the amoeba uses is holozoic type. Okay, what is holozoic type of nutrition? A type of nutrition where an organism takes a solid or liquid food and break it down internally into simpler forms of absorptions. Means a type of nutrition when an organism takes a solid or liquid, like us. Okay, we take solid or liquid food and then we convert it into a simpler forms through our teeth and through the enzymes and through various acids which are present in our stomach, and yes, and furthermore. Okay, so in the amoeba also similar process is going on. So the mode of nutrition is holozoic. It can come in 1-mark question, that which form of nutrition amoeba takes. Okay, that is holozoic type. Okay, एंड व्हाट इज डिफाइन होलोजोइक, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि वो न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड या लिक्विड फूड लेता है और उसको इंटरनली मतलब जब उसने अपने अंदर ले लिया फूड वैक्यूल, अपनी बॉडी के अंदर फूड ले लिया, देन इट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स फॉर एब्जॉर्प्शन. ओके, ताकि जो एंजाइम्स से वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से वो सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है कॉम्प्लेक्स फूड को, और फिर उससे क्या होता है ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके, सेल जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके. ओके, आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज अमीबा एंड व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन द अमीबा इज डूइंग. Okay, now the first step of the nutrition which comes is ejection. Ingestion is amoeba takes a food using temporary finger like extensions, which you can refer to like the diagram. You can see here the food particle, the green food particle is here, and the finger like projections are coming out from the amoeba, and afterwards it will cover the food particle, and then it comes inside the body of the amoeba.
Okay, so this process is known as ejection. Injection is a temporary finger like extensions of the cell surface which fuse over the food particles forming a food vacuole. Okay, वो क्या करेंगे, अपने surface को ऐसे फैलाएंगे और आप फैलाते हैं, finger like projections निकालते हैं, extensions निकालते हैं और food particle को cover कर लेते हैं. food particle को cover करके वो अपनी body के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और एक फूड वैक्यूल बना लेते हैं. ठीक है, फूड वैक्यूल मीन्स कि फूड के अराउंड एक फॉर्म लेयर फॉर्म कर लेना. ओके, दैट दे फॉर्म अ फूड वैक्यूल. And after that, the food through the pseudopodia which help in locomotion and food capture through food vacuole. Now it moves on to the another location. ठीक है, किसकी मदद से, सूडोपोडिया की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा एंड इट कैप्चर्स द फूड इनटू द फूड वैक्यूल. जो फूड है अब वो फूड वैक्यूल में कैप्चर कर लिया है उसने अपनी बॉडी के अंदर आके. ठीक है, अब ये हमने ये फर्स्ट स्टेप है. ठीक है, इसमें क्या करा, उसने फिंगर लाइक एक्सटेंशंस निकाले और फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया है और सूडोपोडिया के थ्रू क्या कर रहा है, वो लोकोमोशन कर रहा है. फूड से उसने फूड वैक्यूल बना लिया है अपनी बॉडी के अंदर. ठीक, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप it is digestion. So what is digestion? Inside the food vacuole, the food is in the complex form. Yes, so first we have to break it down into the simpler form. So inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones. So in the food vacuole only, complex food is broken down into the simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. Then it comes into the cytoplasm. After the breaking down of the complex food, it becomes a simpler one, then it diffuse into the cytoplasm. Okay, afterwards the food is converted, जो food है वो एक soluble form में convert हो जाता है food vacuole के अंदर बहुत सारे digestive enzymes की मदद से. ओके, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसकी हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनने में. देन जो सिंपल सब्सटेंस है वो फिर साइटोप्लाज्म जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, डिफ्यूज कर लेता है. ओके, आई होप डाइजेशन समझ में आया होगा. बेसिकली जो फूड वैक्यूल है, जो हमारा फूड हमने कैप्चर किया था उसको हमने सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया और साइटोप्लाज्म ने उसने एब्जॉर्ब कर लिया है. ठीक है, किसकी मदद से, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से. अब मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एसिमिलेशन. व्हाट इज एसिमिलेशन? एंटरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल फूड कंपोनेंट्स. सो अब क्या हुआ, अब हमने तोड़ दिया, सिंपल फॉर्म में हो गया, साइटोप्लाज्म ने एब्जॉर्ब भी कर लिया. अब उसको यूज़ भी तो करना है ना, एनर्जी में यूज़ करना है, उसको इधर उधर जाने के लिए यूज़ करना है. तो हम यूटिलाइजेशन करेंगे सिंपल फूड कंपोनेंट्स का. कौन करेगा? सेल यूज़ करेगा अपने कोई भी काम करने के लिए. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. एसिमिलेशन इज़ वेरी इजी. जो भी सिंपल फॉर्म, जो भी हमने सिंपल फूड कंपोनेंट्स है उसको हम यूटिलाइज करेंगे बेसिकली थ्रू और बाय द सेल. Now in the next step, which is your final and last step, that is ejection. Ejections, the word is also explaining itself. What is ejection? Eject means to remove something. Okay, so the remaining undigested material, or you can say the waste material, the excreta, okay, it is moved by the surface of the cell, or you can say thrown out. Okay, so the process of elimination of undigested food is called ejection. The process of elimination is of undigested food or waste material is called ejection. And this is the final step of the nutrition in amoeba. I hope you understood the video well, and you can refer to the slides or take screenshots for like proper define. Okay, and if the short note or explanation come like explain briefly or write a short note on nutrition in amoeba, so you can write or combine all the slides together and form a very beautiful answer through all these slides. Okay,
So thank you for watching this video. I hope you like this video. Please like, share and comment and subscribe to my channel. Thank you.